This is our second NCERT book reading clip for the chapter 9 biomolecule, and we in this clip we will be discussing lipids and the nitrogen bases. Before that, I promised you that I will explain what is Zwitter ionic form. तो बघा, ही आपली बायोमॉलिक्यूल 9व्या चॅप्टरची सेकंड ऑडिओ क्लिप आहे. आपण अमिनो ॲसिड वाचून पूर्ण केलं आहे आणि महत्त्वाच्या अंडरलाईन केल्या ज्या तुम्ही एका पेजवर लिहिणार आहे आणि त्या 1-2 वेळा वाचणार आहे. तुमचा क्वेश्चन लूज होणार नाही. शेवटी आपण हे झ्विटर आयोनिक फॉर्म काय असते अमिनो ॲसिडचं इतपर्यंत आलो होतो. और मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको दूसरी क्लिप शुरू करने के पहले ये बताया जाएगा, तो ध्यान दो. कोई अमीनो एसिड कैसे होता? तो सर, ये कार्बन माने अल्फा कार्बन, उसको एक तरफ COOH माने कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी तरफ NH2 माने अमीनो ग्रुप, एक तरफ R ग्रुप माने फंक्शनल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन. ऐसे कोई अमीनो एसिड रहता. अब देखो, अगर इस अमीनो एसिड को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज pH लो माने बिलो 7 अगर रखते हैं तो क्या होगा? तो सर, मला एवढं कळतं की जर ते ॲसिडिक सोल्यूशन आहे म्हणजे त्याचा pH लो आहे म्हणजे 7 पेक्षा कमी आहे, तर त्याच्यात खूप सारे हायड्रोजन आयन्स असतात. सो इट इज रिच इन हाइड्रोजन आयन्स. तो एक हाइड्रोजन आयन अगर इस NH2 ने ले लिया तो वो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव. तो देखो यहाँ पर, तो ये है CH, मतलब ये CH, ये यहाँ लिखा है. ये कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, ऊपर में ये R ग्रुप, और एसिडिक pH माने लो pH पे उसने हाइड्रोजन आयन ले लिया और ये जो NH2 था वो अब बन गया NH3 पॉजिटिव. तो ॲसिडिक pH म्हणजे लो pH मध्ये अमिनो ॲसिड प्रोटॉन गेन करतो आणि जो अमिनो ग्रुप आहे NH2 आता तो NH3 पॉझिटिव्ह बनतो. आता या अमिनो ॲसिडचं नेचरच चेंज झालं. आता हा बनला बेसिक अमिनो ॲसिड. म्हणजे when a amino acid is kept in a solution of acidic pH, then it became a basic amino acid. म्हणजे त्याच्यावर कोणता चार्ज आला? पॉझिटिव्ह चार्ज. हा इथे बघा, पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आणि असे पॉझिटिव्ह चार्ज वाले बेसिक अमीनो एसिड कोणते असतात? तो सर हमने एग्जाम्पल देखा. सो इट इज लाइसिन, आर्जिनिन. अब थोड़ा अलग करते. देखो वापस, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, H, R, NH2. तो इस अमीनो एसिड को अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं हुज pH इज हाय, म्हणजे असं सोल्यूशन जे बेसिक आहे त्याचा pH हाय आहे म्हणजे 7 पेक्षा जास्ती आहे, तर काय होईल? तो सर, इट विल लूज द हायड्रोजन आयन. म्हणजे हा हायड्रोजन आयन इथून निघून जाईल आणि इथे येईल निगेटिव्ह चार्ज. तो देखो, हा कार्बन, हायड्रोजन, R ग्रुप, हा NH2 जसाच्या तसा, आणि इकडे इथून हायड्रोजन निघून गेला म्हणजे COOH की बजाय COO निगेटिव्ह. तो आत्ता हे अमिनो ॲसिड बनलं ॲसिडिक.
म्हणजे त्याच्यावर आता हा बघा निगेटिव्ह चार्ज आला. तो ज्यांच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो ते अमिनो ॲसिड ॲसिडिक असतात. ज्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो ते अमिनो ॲसिड बेसिक असतात. सो ॲसिडिक अमिनो ॲसिडचं एक्झाम्पल ग्लुटामिक ॲसिड. बेसिक अमिनो ॲसिडचं एक्झाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन. आता बघा, हम लोग अमीनो एसिड को मतलब इस अमीनो एसिड को समझो COOH. So when this amino acid is kept in such a solution whose pH is adjusted between acidic and basic, तो आता त्याला अशा याच्यात ठेवलं ना ॲसिडिक ना बेसिक, तर काय होते साइमल्टेनियसली एक ही समय अमीनो एसिड पे देखो दो चार्ज दिखते हैं. यहाँ है निगेटिव. ऐसा चार्ज कब आता? इन अ बेसिक पीएच. और यहाँ है पॉझिटिव्ह. असा चार्ज कधी येतो? व्हेन केप्ट इन एसिडिक सोल्यूशन. तो साइमल्टेनियसली अमीनो एसिड पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, पर एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव होना चाहिए, तो उसे कहा गया है ज्विटर आयोनिक फॉर्म. तो कल मैं इस चीज को नहीं जानता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इसको एक बार पढ़ के समझाऊंगा. तो आता बघा, what is Zwitter ionic form? The amino acid when kept in a solution whose pH is adjusted between acidic and basic at certain point, it carries both the charge negative and positive, and this is called Zwitter ionic form. तो before we start the second clip, और उसमें हमको लिपिड पढ़ने हैं, तो एक बार मैं चाहता कि बिना एक्सप्लेन करे यहाँ तक वापस एक बार पढ़ दूँ, तो आप भी कनेक्शन में आ जाएंगे. कंटाळा करायचा नहीं. सो हम लोग पहले से स्टार्ट करते. देखो, देर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर. नाउ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, are all living organisms made up of same chemical, that is element and compound? You have learned in chemistry how elemental analysis is done. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or microbial paste, then we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several other, and their respective content per unit mass of living tissue. If the same analysis is done on a piece of Earth's crust, as example of non-living thing, we obtain a similar list. We obtain a similar list. What are the differences between the two lists then? That is the list of substances in living thing and non-living thing. In absolute term, no such difference could be made out. All the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue. However, a closer examination revealed that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism as compared to the earth crust. We can continue asking in a same way, what type of organic compounds are found in living organism? How does
one go about finding the answer? The answer is one has to perform now chemical analysis. We can take any living tissue, say example, a vegetable piece or a piece of liver of animal, and grind it in trichloroacetic acid Cl3CCOOH using mortar and pestle. Then we obtain a thick slurry. If we were to stream this slurry through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called filtrate, or more correctly acid soluble pool, and the second is retenate or acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in acid soluble, that is filtrate. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify particular organic compound. It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compound. In other words, one isolates and purify a compound. Analytical technique, when applied to compounds, give an idea about molecular formula and probable structure of the compound. All carbon compounds that we get from living tissue are together called biomolecule. However, living organisms have also got inorganic elements and inorganic compounds in them. How do we know this? A slightly different but destructive. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. One waves a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight or fresh weight. Wet weight or fresh weight, and dry it. All the water evaporate. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all carbon compounds are oxidized to gaseous form like CO2 and water vapor and are removed. What is left is called ash. This ash contains inorganic element like calcium, magnesium, etc. and inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc.
while analysis of compound gives idea of kind of organic and inorganic constituents present in a living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketone, aromatic compounds. So for chemistry point of view, the functional groups are identified: aldehyde, ketone, aromatic compound. But from biological point of view, we shall classify them as amino acids, nucleotide bases and fatty acids. Then we have completed amino acid. So let us give here number 1, amino acids. Amino acids are organic compounds containing amino group NH2 and acidic group COOH as a substituent on same carbon, that is alpha carbon. Hence they are called alpha amino acid. They are substituted methanes. There are 4 substituent group occupying 4 valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable group designated as R group, like this. So this is alpha carbon having hydrogen, carboxyl group, amino group and variable, that is R group. So based on nature of R group, there are many amino acids. So a protein contains 20 types of amino acids. Remember an additional point: amino acid can also be classified as essential and non-essential. सो अमिनो ॲसिडला आपण 2 प्रकारे क्लासिफाय करू शकतो, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. तो एसेंशियल जो हम लोग नहीं बनाते वो 8 है और उनके लिए हमें डाइटरी सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है. वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिल सकते, मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकते, वेजिटेबल फ्रूट से मिल सकते या ग्रेन से मिल सकते. एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब जो हम लोग बना सकते वो 12 है. तो उसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. सो based on nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in protein are only 20. So, types. The R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen, so this is underlined in case of glycine,
CH3 a methyl group in case of alanine. Hydroxyl methyl CH2OH in case of serine. The 3 of 20 amino acid are shown in a figure 9.1. The chemical and physical properties of amino acid are essentially that of amino group, carboxyl group and functional group. Based on number of amino and carboxyl group, there are acidic amino acid, for example glutamic acid, which is having a positive charge. Basic amino acid, for example lysine, which has a positive charge. Neutral amino acid, valine. Similarly, there are aromatic amino acid, tyrosine, tryptophan, phenylalanine. A particular property of amino acid is ionizable nature of NH2 group or COOH group. Hence, in a solution of different pH, the structure of amino acid changes. Now, how it changes? When this amino acid is kept in a solution of acidic pH, that is low pH, that is below 7. So, the NH2 group will take a proton ion and it became NH3 positive, like this, A picture. So this is kept in acidic pH and now it carries a positive charge, so it behaves as a basic amino acid. Other hand, when the same amino acid is kept in a basic pH, that is pH high, that is above 7, now its COOH group lose the hydrogen ion and became COO negative and behave as a acidic amino acid and have negative charge. But when we adjust the pH between acidic and basic, simultaneously it carries negative and positive charge both, and this form is called Zwitter ionic form. So this is hurriedly we have revised. Now we will proceed to the second title. So अभी हमको देखने हैं नंबर 2, लिपिड्स. अब ध्यान दो, लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble. They could be simple fatty acid. So fatty acid is a kind of lipid. A fatty acid has carboxyl group COOH attached to R group. So this is R group to which COOH is attached. So this is a fatty acid. This R group can be, so the R group could be as simple as CH3 methyl, C2H5 ethyl, or higher number of hydrocarbon groups. So from carbon, so a fatty acid has a carboxyl group attached to R group. The R group, this one, may be CH3 methyl, C2H5 ethyl,
or higher number of hydrocarbon group. From carbon 1 to 19. So underline carbon 1 to 19 कार्बन. म्हणजे आर ग्रुप जो असतो तो 1 कार्बन पासून, म्हणजे जसं मिथिलमध्ये 1 आहे, इथिलमध्ये 2 आहे, तर 19 पर्यंत कार्बन असू शकतात. अब अंडरलाइन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर एग्जाम्पल, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon. तो palmitic acid is a fatty acid having 16 carbon including carboxyl carbon. मतलब इसको पकड़ के टोटल होंगे 16. Now, for example, palmitic acid has 16 carbon including carboxyl carbon. Arachidonic acid has 20 carbon including carboxyl carbon. और इसीलिए कहा कि वो जो आर ग्रुप है उसमें कम से कम 1 और अधिकतम 19 कार्बन हो सकते, पर यहाँ तो 20 है, बट इंक्लुडिंग कार्बॉक्सिल कार्बन. तो आता तुम्ही ह्या 2 अंडरलाईन ठेवा लक्षात. palmitic acid has 16 carbon and arachidonic acid has 20 carbon. Both include carboxyl carbon. The fatty acid म्हणजे फंक्शनल ग्रुप R आणि COH. This is fatty acid. Fatty acid could be saturated without double bond, or it can be unsaturated with one or more carbon-carbon double bond. तो ज्या फॅटी ॲसिडमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स असतील तर तो अनसॅच्युरेटेड, आणि जर डबल बॉन्ड नसतील तर तो सॅच्युरेट आहे. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल. तो एक लिपिड आपण पाहिलं फॅटी ॲसिड, दुसरं सिंपल लिपिड आहे ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन. Glycerol is trihydroxypropane. Many lipids have both fatty acid and glycerol. तो एक लिपिड आहे फॅटी ॲसिड, एक लिपिड आहे ग्लिसरॉल, आणि काही असे लिपिड आहे त्याच्यात फॅटी ॲसिडही आहे आणि ग्लिसरॉलही आहे. Here fatty acids are found esterified with glycerol. Fatty acids are found esterified with glycerol. So I am not an authority of chemistry, so the words are very Greek and Latin for me, but still I could say CH2OH, CH2OH. This is CHOH. So this is glycerol, which is trihydroxypropane. So now this is glycerol. So fatty acid is like this, RCOOH. तो COOH, COOH R.
याला आपण उलटं लिहिलं तो यहाँ से वाटर डिलीट होगा, तो दिस इज मोनोग्लिसराइड। वापस RCOOH डाइग्लिसराइड, RCOOH ट्राइग्लिसराइड। सो हे इस्टरिफिकेशन झालं। So we said fatty acid could be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon-carbon double bond. Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acids RCOOH, this is fatty acid, are found esterified with glycerol. They can be monoglyceride, having single fatty acid to glycerol, diglyceride, two fatty acid to glycerol, and triglycerides. So suppose this is glycerol and this is fatty acid. So this is monoglyceride, another fatty acid, diglyceride, another fatty acid. So this is triglyceride. So triglyceride will have one glycerol and 3 fatty acids. This is a neat question. Now, because I am a biologist, this diagram will suffice my purpose. So, they can be monoglyceride, diglyceride, triglyceride. These are also called, so triglycerides are also called fats and oils based on melting point. So ट्रायग्लिसराइड्स जे आहे तर त्यांना आपण फॅट म्हणू शकतो, ऑयल म्हणू शकतो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट. कैसे? ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. अंडरलाइन, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल जिंजेली ऑयल and hence remain oil in winter. Now suppose winter temperature is 15 degree centigrade at night. Suppose today's temperature is 15 degree, so which is very low. तो जे ट्रायग्लिसराइड इतक्या कमी टेम्परेचरवरती लिक्विड राहतील. So oils have a lower melting point and remain oil in winter. So जो होंगे ट्राइग्लिसराइड इतने कम टेम्परेचर में लिक्विड, तो दे आर कॉल्ड ऑयल्स. और जो जम जाएंगे सो दे आर कॉल्ड फैट्स. So these are also called fats and oil based on the melting point. Oil have a lower melting point, for example gingerly oil, and hence remain oil in winter. Can you identify a fat from market? Some lipid, अब ये अलग कैटेगरी है. Some lipid have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. तो अगर कोई लिपिड है और उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया, तो सर हा एखादा लिपिड आहे आणि याच्यासोबत फॉस्फेट अटॅच झाला, तर याला कॉन्जुगेटेड लिपिड्स म्हणतात. तो जैसे यहाँ फॉस्फेट अटैच है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो सकता, यहाँ प्रोटीन भी अटैच हो सकता. तो सर
समजा या लिपिडला फॉस्फेट अटॅच असेल तर वी कॉल इट ॲज फॉस्फोलिपिड. सो कार्बोहायड्रेट अटॅच असेल तर ग्लायकोलिपिड. आणि जर प्रोटीन असेल तर लिपोप्रोटीन. म्हणजे हे कोणती कॅटेगरी आहे लिपिडची? कॉन्जुगेटेड. आणि ग्लिसरॉल, फॅटी ॲसिड, वॅक्स ही कोणती कॅटेगरी आहे? सो दॅट कॅटेगरी इज सिम्पल लिपिड्स. म्हणजे आपण लिपिडला क्लासिफाय करू शकतो ॲज अ सिम्पल लिपिड लाईक फॅटी ॲसिड, ग्लिसरॉल्स किंवा वॅक्स. देअर मे बी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जैसे ग्लायकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, lipoprotein like this. And another category is sterols, that is cholesterol. So असं आपण क्लासिफाई करू शकतो, पर वो हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. NCERT में जो दिया है एग्ज़ाम दृष्टि से उतना हम लोग देखेंगे. So some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are called phospholipids, conjugated lipid. They are found in cell membrane. तो सर फॉस्फोलिपिड कसं बनत असेल? तर जसं एक ट्रायग्लिसराईड घ्या, म्हणजे हा ग्लिसरॉल आणि हे 3 फॅटी ॲसिड आहे, F F F. अब एक F की बजाय P. सो हे 2 फॅटी ॲसिड, हा ग्लिसरॉल आणि हा फॉस्फेट आहे. तो दिस इज फॉस्फोलिपिड. सो विच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपण सेल मेम्ब्रेन अशी काढतो. अशी. हे असतात पोलर हेड्स. सो इकडून ॲक्वस सोल्युशन म्हणजे वॉटर, हे पोलर हेड, इकडून ॲक्वस सोल्युशन म्हणजे वॉटर. आणि हे जे आहेत ह्या त्यांच्या नॉन पोलर म्हणजे हायड्रोफोबिक टेल्स असतात. अशी मेम्ब्रेन असते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तो they are found in cell membrane, that is plasma membrane. Now very important, lecithin is one example of phospholipid. Lecithin is example of phospholipid. Some tissue, especially neural tissue, have लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. तो आता आपण लिपिड्स कंप्लीट केले. आता हरिडली आपण रिवाइज करू. सो लिपिड्स आर जनरली वॉटर इनसोल्युबल बट सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. दे कुड बी सिम्पल फॅटी ॲसिड. सो याला मी 1 नंबर दिलं, म्हणजे फॅटी ॲसिड लिपिडचा प्रकार आहे. A fatty acid has a carboxyl group attached to R group. तो हा carboxyl group attached to R group. The R group may be methyl CH3, ethyl C2H5 or higher number of hydrocarbon group. So carbon 1 to carbon 19 may be there in a R group. For example, palmitic acid has 16 carbon including carboxyl carbon. Arachidonic acid has 20 carbon including carboxyl carbon. Fatty acid may be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon-carbon double bond. Now second type of lipid is glycerol.
which is nothing but trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acid are found esterified with glycerol. They can be monoglyceride, so ग्लिसरॉल को एक फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल को दो फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल को तीन फॅटी ॲसिड. दीज आर आल्सो कॉल्ड, म्हणजे ट्रायग्लिसराइड जे असतील ते, दे आर आल्सो कॉल्ड फॅट्स अँड ऑइल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट. Oil have a lower melting point. For example, gingerly oil, and hence remain oil liquid in winter. Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. Such lipids are called phospholipid. So let us give it 3 number. Actually 4 number. So fatty acid, glycerol, triglycerides and phospholipids, conjugated lipids. So phospholipids are found in cell membrane. Very important. Lecithin is example of phospholipid. Some tissue like neural tissue have more complicated lipids also. तो यहाँ हमने लिपिड कंप्लीट किया. एंड नाउ वी विल टॉक फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, म्हणजे नाइट्रोजन बेसेस. अब यहाँ हम लोग देंगे नंबर 3. सो 1 नंबर अमाइनो एसिड्स, 2 नंबर लिपिड्स, 3 नंबर नाइट्रोजन बेसेस. Living organism have a number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये असे अनेक कार्बन कंपाउंड आहे जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो सकती. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच देयर इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग. सम ऑफ दीज, तो वो तो अनेक कार्बन कंपाउंड है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पर सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस. एडेनिन, ग्वानिन together called purine, cytosine, thymine, uracil together called pyrimidine. When found attached to sugar, म्हणजे adenine attached to sugar or guanine attached to sugar and so on. So when the nitrogen bases are attached to sugar, they are called nucleoside. तो सर समझा राइबोज शुगर ला. अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता. So this is a राइबोज शुगर. तो राइबोज शुगर में यहाँ सेकेंड कार्बन को OH रहता, तो फर्स्ट कार्बन को एडेनिन है. तो व्हेन अ नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू शुगर, इट इज अ न्यूक्लेवोसाइड. सो दिस न्यूक्लियोसाइड इज एडेनोजीन. अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो ग्वानो एडेनोजीन, ग्वानोजीन. अगर यहाँ पे साइटोसिन है, साइटिडीन. अगर यहाँ पर
थायमिन है, थायमीडीन, और अगर यहाँ पर यूरासिल है, यूरीडिन, तो एडेनिन एडेनोजिन, ग्वानोजिन, साइटिडीन, थायमिडीन, यूरिडीन हे सगळे कोण आहेत? न्यूक्लेओसाइड, म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ नायट्रोजन बेस अँड शुगर. सो हा एकदा नीट क्वेश्चन होता. व्हॉट इज यूरिडीन? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड? नहीं सर, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड. तो अब वापस देखते. सो एडेनिन, ग्वानिन, cytosine, uracil, thymine, when found attached to sugar, they are called nucleoside. If phosphate group is also found esterified to sugar, they are called nucleotide. तो वापस एक बार I will explain. Now this is suppose a ribose sugar. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon and 5th carbon. So पहले कार्बन को रहती नाइट्रोजन बेस और पांचवे को रहता फॉस्फेट. तो SNP is nucleotide and this phosphate is esterified with the sugar, पांचवे कार्बन के साथ. तो nucleotide will also be of phi type depending upon nitrogen base. Nitrogen base may be adenine or guanine or cytosine or thymine or uracil. कुठलेही असू शकते नाइट्रोजन बेस. तो सर फिर इनके नाम क्या होंगे? अगर एडेनिन शुगर को अटैच है और वहाँ फॉस्फेट भी है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडेनाइलिक एसिड. ग्वानिन अटॅच असेल तर ग्वानाइलिक एसिड. साइटोसिन अटैच है तो साइटिडीनाइलिक एसिड. थायमिन अटैच है तो थायमिडीनाइलिक एसिड. आणि युरासिल अटॅच असेल तो यूरिडीनाइलिक एसिड. तो एक बार ये नीट क्वेश्चन था कि यूरिडीनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड. और यूरिडीन क्या था? न्यूक्लियोसाइड. If a phosphate group is also found attached esterified to the sugar, they are called nucleotide. आता एडेनोजिन, ग्वानोजिन, थायमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन are the nucleosides of an adenyllic acid, thymidyllic acid, guanylic acid, uridylic acid and cytidyllic acid are called nucleotides. तो कुछ मिसस्पेल हुए थे, मिसप्रोनाउंस भी हुए थे. तो एडेनिलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड
आर न्यूक्लियोटाइड्स. आता हे लक्षात ठेवा लागतात बरं. 5 प्रकारचे न्यूक्लिओसाइड, ॲडेनोझिन, ग्वानोझिन, थायमिडिन, युरिडिन, सायटिडिन. 5 प्रकारचे न्यूक्लिओटाइड. ॲडेनिलिक ॲसिड, थायमिडिलिक ॲसिड, ग्वानिलिक ॲसिड, युरिडिलिक ॲसिड, सायटिडिलिक ॲसिड आर न्यूक्लिओटाइड. न्यूक्लिक ॲसिड are of 2 types, DNA and RNA, consist of nucleotides only, no nucleoside. DNA and RNA function as a genetic material. You know, DNA is a genetic material in most of the organism. RNA also function as a genetic material in some viruses. Now let us see the important pictures. हे सुद्धा एग्जाम मध्ये येतात, लक्ष द्या. तो देखो, कल हमने पहली क्लिप में अमीनो एसिड के लिए ये चित्र देखा था. तो अल्फा कार्बन, NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज R ग्रुप. The R group can be so simple like hydrogen in glycine. It may be methyl in alanine. It may be hydroxymethyl CH2OH in case of serine. अब हम लोग अभी देखे हैं लिपिड्स. तो हम अब लिपिड्स देखेंगे डायग्राम्स में. सो फैट, ऑयल दोनों क्या है? लिपिड्स है. तो जो ट्राइग्लिसराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते वो ऑयल, और जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है दे आर फैट. तो पहला चित्र, अ वेरी सिंपल lipid is glycerol, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन. पहा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, CH2OH, CHOH, CH2OH. Another lipid is fatty acid. So this is carboxyl group and this is R group. अब देखो, इसमें पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होने चाहिए इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. तो 14 1 14 प्लस 1 15 एंड दिस वन 16. तो फैटी एसिड एक लिपिड हो गया, ग्लिसरॉल दूसरा लिपिड हो गया. अब तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स. तो ये CH2OH, CHOH, CH2OH हे असं होतं. अब देखो, ये फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हो गया एंड वाटर डिलीट हो गया यहाँ से. ये दूसरा, दिस इज 1 फैटी एसिड, दिस इज 2nd फैटी एसिड, दिस इज 3rd फैटी एसिड. तो ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड. सो ट्राइग्लिसराइड R1, R1, R2, R3 are fatty acids. Now फिर conjugated lipid number 4, phospholipid. Example lecithin. They are present in plasma membrane. हमने देखा था phospholipid. तो फर्क कहाँ पड़ा देखो, R1, R2, this is R1, R2, और यहां देखो फॉस्फेट अटैच हो गया. तो
मी असं म्हटलं होतं की समजा हा ग्लिसरॉल आहे आणि याला हे 3 फैटी एसिड है, तो ये बन गया ट्राइग्लिसराइड, और एक फैटी एसिड चेन कम और उसकी बजाय यहाँ फॉस्फेट है, तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड. देन अनदर टाइप ऑफ लिपिड इज कोलेस्टेरॉल. अब उसके बाद हम लोगों ने देखी नाइट्रोजन बेसिस. तो अब ध्यान दो, एडेनिन इट इज डाइसाइक्लिक, दिस इज अ प्यूरिन. तो ग्वानिन इज आल्सो प्यूरिन, इट इज आल्सो डाइसाइक्लिक. यूरासिल is monocyclic, it is pyrimidine. तो cytosine and thymine are also pyrimidines. So you know that uracil is present at the place of thymine in RNA. आता आपण बघू एक combination of नाइट्रोजन बेस एंड शुगर. तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5. सो हे पेंटोज शुगर झाली राइबोज. सो राइबोज का क्या सबूत, यहाँ OH है, यहाँ H रहता तो ये डीऑक्सीराइबोज होती थी. और पहले कार्बन को अटैच है एडेनिन. सो हा झाला न्यूक्लियोसाइड एडेनोजिन. अगर अटैच है यूरासिल तो हो गया यूरिडीन विच इज अ न्यूक्लियोसाइड. कंटाळा करू नका, हे नीट क्वेश्चंस आहेत. और अब एक न्यूक्लियोटाइड, तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस विथ शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोटाइड. सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5वें कार्बन को है फॉस्फेट और यहाँ है नाइट्रोजन बेस. तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है एडेनाइलिक एसिड. यहाँ ग्वानिन होता ग्वानाइलिक एसिड, लाइक दिस. So diagrammatic representation of small molecular weight organic compound in living tissue. तो इस डायग्राम में नाइट्रोजन बेसिस भी है और लिपिड्स और अमीनो एसिड्स भी है. अब हमारी बाकी है सिर्फ शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो आगे आएगा. तो ग्लूकोज इज C6H12O6. सो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5. सो 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा. और राइबोज इट्स अ पेंटोज शुगर, 1, 2, 3, 4 और ये 5. तो C5H10O5 इज राइबोज. So, after completing number 1 amino acid, number 2 lipid, number 3 nitrogen bases, our next title is primary metabolites and secondary metabolites, and we will discuss it in a next clip.